Hello everyone, welcome to our channel GEM. In today's video, we are going to discuss how to change from active to passive voice. First of all, we need to know what is active voice and what is passive voice, and then why do we need to change from active to passive voice and how to change it. So let's start. What is active voice? When the subject is in action, that is active voice. जब हमारा जो पूरा फोकस है दैट इज ऑन द सब्जेक्ट. ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर रीडिंग बुक्स, माई मदर इज कुकिंग फूड. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर अटेंशन इज ऑन द सब्जेक्ट. अनदर इज पैसिव वॉइस व्हेन आवर फोकस इज ऑन द एक्शन. जब हमारा पूरा ध्यान एक्शन पे होता है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एक्शन नॉट इन द सब्जेक्ट. हमें इसमें कोई मतलब नहीं है कि किसने किया, लेकिन क्या किया उस पर हमारा फोकस है. देन वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वॉज रिलीज्ड in 1985. So this is the sentence. In this sentence our focus is on the movie, releasing of movie. We are not interested who is doing it. Now where do we need to use passive voice? Where do we need to use passive voice? This is what we are going to discuss now. So passive voice is used where? Now the thing is कि हम इस पैसिव वॉइस को यूज कहाँ पे करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम पैसिव वॉइस का यूज कहाँ पे होता है. सो आई टेल यू, फॉर राइटिंग नोटिसेस. ये नोटिस राइटिंग की स्किल तो थर्ड से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है सभी स्कूल्स में. तो जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो उसके लिए हमें पैसिव वॉइस की यूज की जरूरत होती है. सपोज सम पेन इज लॉस्ट, सो वी से अ ब्लैक कलर्ड पेन वाज लॉस्ट. एंड इफ यू वांट टू राइट सम इवेंट, a debate competition will be organized, so you can see that there we need to use passive voice. Another thing, for writing notices at public places. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि पब्लिक प्लेसेस पे जो नोटिस होते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन पैसिव फॉर्म, लाइक parking is not allowed here. This is the example I am giving you. There are many examples like this. किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुछ भी नोटिस दिया होता है तो that is always written in passive form because focus is on the action, not on the subject. Bill sticking is prohibited, smoking is not allowed. So this kind of sentences. Other thing is for newspaper headlines. If you are habitual in reading newspapers, so you must have noticed this thing. Most of the headlines are written in passive forms. Like you must have heard COVID-19 has spread all over the world. So this is also in the passive form. The thieves were caught red-handed. So this kind of sentences you must have seen. So newspaper headlines for writing notices at public places, for writing notice, that is notice writing skill. For all these things, we need to change from active to passive voice. Now the thing is how to change from active to passive voice. हाँ जी, तो अब हम ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे. अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि एक्टिव से पैसिव चेंज करना कितना आसान है. So let's start how to change from active to passive voice. I will just write one sentence. Rahul plays football. In this sentence, Rahul is subject, plays is verb, football is object. Right? Now 5 rules I will write. You just have to learn those 5 rules to change from active to passive always. So rule number 1, object into subject. These rules are very important. Listen to it very carefully and apply it when you have to do the exercises. Object into subject means you have to change the object into subject. That means आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना है. तो यहाँ पे आपका आ गया फुटबॉल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बन गया सब्जेक्ट. रूल नंबर
auxiliary verbs. This rule number 2 is very important and it will keep on changing as per the tense. Immediate after this I will show you the chart on this board only how to change that. So I have encircled it because it will change as per the tense. Here in this it is present indefinite, so use of is, am or are, because football is singular subject, so is will be used. Rule number 3, use of V3. V3 stands for third form of verb. Always in passive voice we always use third form of verb: present, past, past participle. So we are need to use past participle form of the verb always in passive form. So verb is play, play, played, played. So third form of verb is played. Rule number 4, use of by. By is a preposition. Most of the cases we use only by preposition. There are some particular verbs where we need to use some other prepositions. That also I will discuss with you now. So rule number 4, use of by. And rule number 5 is subject into object. जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, अब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे. दैट मीन्स सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओगे. एक चीज मैं आपको बता दूं, व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट देन वी यूज नॉमिनेटिव केस. When it is used as an object, then we use objective case. But here it is the name only, so it will be written this way only. Hanji. So let's see the rules. Rule number 1, object into subject. Rule number 2, use of auxiliary verb. Rule number 3, use of V3. Rule number 4, use of by. Rule number 5, subject into object. आप ये 5 रूल्स याद रखोगे तो आप कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना नहीं भूलोगे. लिटिल बिट चेंजेस आर देयर और सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टेक अप इन दिस वीडियो ओनली. Like I have told you that rule number 2 we need to change as per the tense. So that's what we are going to discuss now. वैसे तो ये जनरली क्या हम टेंसेस के बेसिस पे करते हैं, लेकिन टेंसेस से भी ज़्यादा इजी. अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो उस सिचुएशन में आप कैसे करोगे. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. इफ इन एक्टिव वॉइस, सिर्फ रूल नंबर 2 के बारे में बता रही हूँ मैं. इफ एक्टिव वॉइस देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 प्लस S or ES. In that case, in passive voice, it will be is, am या are accordingly. He plays football. Same sentence I am picking up. Football is played by him. Next is if there is only second form of verb. Negative I am not talking here because you can get confused. Second form of verb, that means it will be past indefinite tense. So there we need to use just was or were. I am not talking about other rules. Other rules will remain the same. I am just talking about the rule number 2. So say let's take the same sentence. He played football. So it will be football क्योंकि singular है. So it will be written was played by him. Next is future indefinite. मैं future indefinite अभी नहीं take up करूँगी. That I will take up with modal auxiliaries. So now I will tell you is, am, are, was, were, first form of verb plus ing. It means it is continuous tense. So in that case, what you have to do with this first form plus ing, you have to write being along with is, am, are, was, were, whatever is there in the
सेंटेंस अकॉर्डिंगली, जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने इज एम आर या वॉज वर्ब में से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है. लेट्स टेक द सेम सेंटेंस. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. आई एम पिकिंग द सेम एग्जाम्पल सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. फुटबॉल is being played by him. ये देखो, this is rule number 2. You can see till now in these sentences only change in rule number 2, else is remaining the same. Next is has, have, had plus V3 और will have, shall have also. ये फिर हम अब परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस, will have और shall have. तो इनमें से कुछ भी है तो इनके साथ हमने क्या ऐड करना है, पैसिव में been. So accordingly has, have, had, singular has accordingly you will see as per the subject, will have और will और shall have. तो इनके साथ आपने ऐड करना है been. So let's take the same sentence. He has played football. Football has been. Football has been played by him. I hope I am clear to you about this. Here addition of been. Rule number 2, as you can say remaining the same, played by him, football. So has been according to the tense. Next is modal auxiliaries. Modal auxiliaries are will, shall, would, should, can, could, may, might, must and have to, has to, had to. तो जब भी इनमें से कुछ भी सेंटेंस है, in that case in passive form we will use be along with any of these auxiliaries. So example is, let's take the same sentence. He will play football. Football will be played by him. आप इन सेंटेंसेस को स्टडी करके देखना. आफ्टर दिस वीडियो व्हेन यू विल वॉच इट, प्लीज सी टू इट. सब में सिर्फ रूल नंबर 2 चेंज हुआ है. एल्स इज रिमेनिंग द सेम. फुटबॉल इज फुटबॉल ओनली, प्लेड इज प्लेड ओनली, बाय इज बाय ओनली, हिम इज हिम ओनली. सो हमने सिर्फ रूल नंबर 2 चेंज किया है. एज पर द टेंस इट विल बी चेंज्ड. This was all about assertive sentences or we can say simple sentences. But there are imperative sentences also. How to change the imperative sentences from active to passive voice. Imperative sentences की वीडियो, अगर आपको imperative sentences के बारे में नहीं पता तो मैंने sentences की एक वीडियो डाली हुई है, that you can watch. Imperative sentences में active to passive कैसे change करना है. I will just take one example, but I will tell you 3 different ways how to change from active to passive in imperative sentence. Suppose we have the sentence open the door. First rule, by using let. Let plus object plus be plus V3. This is the first way. So let's follow this rule. Let, मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ. अब मैंने द डोर ऑब्जेक्ट को उठाया, अब मैंने उसके अकॉर्डिंग बी को उठाया, एंड देन V3 दैट इज ओपन, इट विल चेंज इनटू
opened. This is one way how to change from active to passive. Another way is by using should be. अब should be में हम क्या यूज करेंगे? Object plus should be plus V3. This is rule number 2 for imperative sentences. Object अपना the door, usage बस as it is उठाया हमने should be, and then V3 simple opened. This is another way. और थर्ड वे इज वेरी इजी वन. उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना. यू जस्ट हैव टू सी द काइंड ऑफ सेंटेंस. ये कमांड है, ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है, एडवाइस है. अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सिंपली राइट, सपोज दिस इज एन ऑर्डर, सो यू विल राइट यू आर ऑर्डर्ड टू. जो भी आपको लगता है, सजेशन लगती है सजेस्टेड टू, और रिक्वेस्ट लगती है रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख के आप एज इट इज सेंटेंस को लिख दोगे. यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर. So these are 3 different ways to change from active to passive in imperative. You can opt any one of these 3. Now let's talk about double object sentences. अब कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट 2 होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. सो दैट ऑल्सो आई टेल यू. वो भी हम 2 तरह से, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो डबल वे में दैट कैन बी चेंज इन टू पैसिव. ही गेव me a book. Now in this sentence he is the subject, gave is the verb, this is object, this is also object. 2 objects are there, so we will change it 2 ways only. Let's take it as object first. पहले हम me को as an object लेते हैं. So how it will be changed? I was given a book by him. This is one way. That is when we have taken me as an object. Another way is if we are taking a book as an object, so it will be a book. बाकी रूल्स अपने सेम ही है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे. सेम वे वी आर डूइंग. अ बुक वॉज गिवन टू मी. अब यहाँ पे हमने 2 प्रपोजिशन ऐड किए. टू मी बाय हिम. I hope it's clear. Double object, it will be changed this way. Now let's take up the question 1. In sentences, when we change from reported speech, that is direct to indirect, then we change the question into statement. लेकिन active to passive में question remains question only. So there are 2 kinds of question. One is starting with WH words and one is starting with auxiliaries. All auxiliaries. So I will give you both the examples. So let's see what is the sentence. What are you doing? जो क्वेश्चन वाले हैं उसमें क्वेश्चन ही रहेगा और जो क्वेश्चन के साथ ऑक्सिलरी यूज हुई है वो भी वही रहेगी. बट आप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट में बदलेगा उसके अकॉर्डिंग EZMR को चेंज कर सकते हो. जैसे इसमें सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग. पैसिव में चेंज करने के लिए पहले आप लिखोगे व्हाट. उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यू है. ठीक है, तो इसमें आप किस फॉर्म में चेंज करोगे. आपने आर की जगह पे, क्योंकि डन आ रहा है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इज. सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस, EZMR बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो व्हाट इज बीइंग, देन यूसेज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं रूल को ही फॉलो कर रही हूँ. यूसेज ऑफ बाय, रूल नंबर 4, एंड रूल नंबर 5 इज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. I hope it's clear. One more example, that is with EZMR. Are you reading a book? अब यहाँ तो जो क्वेश्चन है that is starting with are. लेकिन जब आप a book को as a subject लेके आओगे तो ये सिंगुलर है. तो यहाँ पे जो आपका are है that will change into is. Is a book. Then usage of being, usage of V3, usage of by, usage of subject into object.
is a book being read by you. So these are two different ways for changing from active to passive in interrogative sentences. Now I will discuss some different kind of sentences which generally confuse people. How to change from active to passive. ये तो passive हो ही नहीं सकता, ये कैसे change हो रहा है. So let's talk about those three sentences. First sentences, it is time to take tea. जब भी आपका सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव फॉर्म में यू विल स्टार्ट इट विद द सेम वे. सो इट विल बी स्टार्टिंग इट इज टाइम फॉर टी टू बी, ये हमने डिस्कस किया था टू के साथ बी, टी टू बी टेकन. ये इसी फॉर्म में चेंज होगा. स्टार्टिंग इसकी इट इज टाइम फॉर से होगी, टू के साथ आप बी यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करोगे, बट अदर रूल्स विल चेंज. ऐसे एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ. देयर इज नो मनी टू बाय अ बुक. No, there is no money to buy. Let's take up to this only. So if the sentence is like this, then it will also start this way. जैसे हमने इसमें it is time से start किया, तो ये भी आपका start होगा there is no money से. There is no money to be bought. So this way this sentence can be changed. In the same way there are some more sentences, like there is a sentence let us sing. अब जैसे मैंने आपको imperatives में बताया था you are advised to, you are ordered to, इसमें थोड़ा सा हम different way में यूज करेंगे. जब भी sentence let us से start हो रहा है in active voice, in passive voice how to change it? It is suggested that we should sing. It is suggested that. जब भी आपका let us से start हो रहा है, अगर let me sing होता तो आपका था it is suggested that I should sing. ये according to us I have written, we starting आपकी ऐसे ही होगी. So it will be written this way. अब एक और different sentence I am going to take up with you. I am to write a book. I am to write a book. This will be changed same way like a book, that is object. अब उसके बाद ये singular है तो is, उसके बाद ये to form of verb है to be, then usage of V3 written, then usage of by, and in the last me. So this sentence will be changed this way. Now some more sentences like this. He asked Binay to switch off the TV. अब इस सेंटेंस में हमारे पास this is subject, this is verb and this is object. Then what is this? This is infinitive. अगर आपने gerunds, participle, infinitives, non-finites का टॉपिक किया तो you must be knowing about it. अगर आप इसकी वीडियो चाहते हो तो I will definitely make for you. You can mention in comment box. He asked Binay to switch off the TV. अब यहाँ पे हमने पीछे वाला सेंटेंस जो कि to infinitive से है उसको हमने अभी टच नहीं करना. We will change the passive voice from this first part only. Binay was asked to switch off the TV. आपने फर्स्ट पार्ट चेंज करके सेकंड पार्ट को एज इट इज लिख देना है. सो देयर इज नो नीड टू चेंज इट, इट विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट इज she wants that she should be
respected. This is also a different kind of sentence. बहुत बार आपने सुना होगा, we believe that honesty is the best policy, we think India is the best country. तो ऐसे जो sentences होते हैं तो बहुत बार ये discussion होते हैं कि ये तो पैसिव में change हो ही नहीं सकता, but there is also a rule for the same. One example I am giving you here. She wants that she should be respected. आप इसको कैसे पैसिव में change करोगे? It is, क्योंकि ये wants है, अगर wanted आता तो it was आ जाता. It is wanted by her that, उसके बाद ये जो sentence है it will be written as it is. It is wanted by her that she should be respected. We believe that honesty is the best policy. कैसे change होगा? It is believed by us that honesty is the best policy. We think India is the best country. It is thought by us that India is the best country. So ऐसे जो sentences हैं ये इस passive form में इस तरह से change होते हैं. अब sometimes what happens that adverbs of manner is there in the sentence और उसमें थोड़ी सी confusion हो जाती है कि it should be written before the object or after the object. So one sentence I will give you that one also. My mother looks after me well. How to change it into passive form? जनरली अगर हम चेंज करेंगे तो आई एम लुक्ड आफ्टर वेल बाय माई मदर, ये सब ये सेंटेंस बनाएंगे. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर द सेम? आई एम वेल लुक्ड आफ्टर. अब इसमें आप बाय माई मदर अगर आप मिस भी करना चाहते हो तो यू कैन मिस इट बिकॉज इट इज क्वाइट अंडरस्टूड. आफ्टर दिस नाउ वी विल डिस्कस दोज particular verbs where we don't need to use by preposition. In the beginning of this video I told you rule number 4 that is use of by. लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि कई बार कुछ एक verbs ऐसी होती हैं जहाँ पे हम by preposition use नहीं करते. तो now I will discuss those particular verbs with you which preposition will be used where. So rule number 4, usage of by preposition. But here are some verbs with which we use different prepositions. That's what we are going to discuss now. Pleased with, interested in, astonished at, prepared for, compared to, quarreled with, no to, satisfied with, addicted to, knocked at, listen to, dependent on. So these are the verbs where you need to use different preposition, not the by preposition. So I hope you have understood this concept. If still there is some confusion, you can mention in the comment box. I will definitely try to clear your doubts. Thank you and have a nice day.